Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss the law of conservation of linear momentum with examples of chapter 5 laws of motion for class 11 physics in part 11 of this chapter. First of all, a statement of the law of conservation of linear momentum. The total linear momentum of an isolated system remains constant, or the total linear momentum of a system remains constant if the net external force acting on the system is zero. In notation form, a small p vector is equal to constant. A small p vector is the symbol of linear momentum if net external force, that is total external forces acting on the system, F equals to 0. Net external force means the sum of total external forces acting on the system. And when the net external force acting on the system is 0, that is F equals to 0, then the total linear momentum of the system, a small p vector, is equal to constant, which is the law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum, रेखीय संवेग संरक्षण नियम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स और फोर्सेस आर एक्टिंग. यदि किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स या फोर्सेस एक्ट नहीं करता है तो उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है. विलगित निकाय. तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय का टोटल लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ the law of conservation of linear momentum. अब इस स्टेटमेंट को, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के स्टेटमेंट का एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है. द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. यदि किसी सिस्टम पर बाहर से क्रियाशील परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, अर्थात उस सिस्टम पर कोई बाहरी बल या बाहर से क्रियाशील होने वाले सभी बलों का योग 0 हो, तो उस सिस्टम का लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. That is, the total linear momentum of a system remains constant if the net external force acting on the system is 0. उस सिस्टम पर बाहर से क्रियाशील होने वाले बलों का परिणामी मतलब टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है तो उस सिचुएशन में उस सिस्टम का टोटल लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. पी वेक्टर, अ स्मॉल पी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अ स्मॉल पी वेक्टर इज द सिंबल ऑफ linear momentum. A small p vector is the linear momentum of the system, and it is p vector is equal to constant if the net external force acting on the system, बाहरी नेट बाहरी बल उस सिस्टम पर क्रियाशील होने वाला अगर शून्य हो, 0 हो, F इज इक्वल टू 0, then linear momentum of the system remains constant. That is p vector is equal to constant, which is the law of conservation of linear momentum.
Now we can prove the statement of the law of conservation of linear momentum by using Newton's second law of motion. Let a system of n particles, that is, let a system having total number of particles, a small n, suppose p1 vector, p2 vector, p3 vector, dot dot, so on, and in last pn vector are the linear momentum of the various particles of the system, then total linear momentum of the system is a p vector, a small p vector is the total linear momentum of the system of n particles. So p vector equals to p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus dot dot, so on, in last pn vector. किसी सिस्टम में अगर n पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम, फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p1 वेक्टर है, सेकेंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p2 वेक्टर है, थर्ड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p3 वेक्टर है, तथा इन लास्ट nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम pn है, तो उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी का नेट और टोटल लीनियर मोमेंटम p वेक्टर इक्वल्स टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस p4 वेक्टर प्लस p5 वेक्टर and so on, and in last plus pn vector. Now if f external be the net or total external force acting on the system of n particles, that is f vector external is the sum of external forces acting on the system of n particles. Then using Newton's second law of motion, f external equals to rate of change of momentum dp upon dt. F external, that is net external force acting on the system, is f vector external ext in suffix, which is the symbol of net external force, that is total external force acting on the system of n particles. F external is equal to rate of change of momentum, which is dp upon dt, and it is equal to d by dt, and p is the net linear momentum of the system of n particles. So in place of p vector we can write p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus dot dot, so on, pn vector. क्योंकि स्मॉल p वेक्टर सिस्टम का नेट कुल लिनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग है, कुल रेखीय संवेग है स्मॉल p वेक्टर, तो p वेक्टर के जगह पर p वेक्टर के बदले में लिखा जा सकता है इसमें p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस सो ऑन इन लास्ट प्लस pn वेक्टर in Newton's second law of motion. In place of p vector we can write p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus so on, pn vector. So we have d by dt under bracket p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus dot dot plus pn vector, and this is suppose total momentum of linear momentum of the system p vector is equal to p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus so on, pn vector is equation number 1, and this is equation number 2, which is Newton's second law of motion, that is f equals to f external is equal to rate of change of momentum dp upon dt, and in place of p vector, that is total or net linear momentum of the system, we have written in place of p vector p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus so on in last plus pn vector inside the bracket. This is equation number 2. Let this is equation number 2. Now using the law of conservation of linear momentum, that is the statement of the law of conservation of linear momentum, which is total linear momentum of a system remains constant if the net external force acting on the system is 0. So according to the law of statement, according to the statement of the law of conservation of linear momentum, external force acting on the system
should be equal to 0. So write f external, putting f external is equal to 0 in LHS of equation 2, we have, using the law of conservation of linear momentum, f external that is net external force acting on the system, सिस्टम पर बाहर से टोटल कुल क्रियाशील बाहरी बलों का कुल योग अर्थात कुल बाहरी बल F external is equal to 0, from where, using the statement of law of conservation of linear momentum. Write down, using the law of conservation of linear momentum. Hence equation LHS putting F external is equal to 0 using the law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum का यूज कर इक्वेशन 2 के LHS में F external नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दिया जाए तो LHS 0 हो जाएगा. सो इक्वेशन 2 बिकम्स डी बाई डी टी अंडर ब्रैकेट P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस Pn वेक्टर इक्वल्स टू 0. सिंस F external becomes 0, net external force acting on the system according to the law of conservation of linear momentum. So LHS of equation 2 becomes 0. So we have 0 equals to d upon dt under bracket P1 vector plus P2 vector plus P3 vector plus dot dot so on plus Pn vector. This is equation number, suppose this is equation number 3. Now integrating on both sides of this equation, equation number 3, integrating on both sides, we get integral of d by dt of P1 plus P2 plus P3 vector, P1 vector plus P2 vector plus P3 vector plus dot dot so on plus Pn vector equals to integral of 0 into, in LHS we can multiply both sides by dt. So 0 into dt in RHS. अब LHS को हमने RHS में किया, RHS को LHS में कर, interchanging LHS into RHS and RHS into LHS and taking integration on both sides, we get integral of differentiation, that is function itself, function that is inside the bracket is P1 vector, or that is sum of linear momentum of the n particle system. So P1 vector plus P2 vector plus P3 vector plus dot dot so on plus Pn vector, and in RHS it is 0 into dt, that is 0, integral 0, and integral 0 is constant. Since differentiation of constant is 0, so integral of 0 is constant, or in place of P1 vector plus P2 vector plus P3 vector plus dot dot so on and so on plus Pn vector, this is the sum of linear momentum of the entire particles, that is n particles of the system, which is the net or total linear momentum of the system. So in place of P1 vector plus P2 vector plus P3 vector plus so on plus in last Pn vector, we can write P vector, that is total linear momentum of the system, is equal to constant, that is a small p vector, which is the net linear momentum of the system. A small p vector क्या है? net linear momentum of the system है, जो कि system of n particles के each particle का linear momentum का सम है. मतलब जितने भी n particle system में जितने भी particles हैं, तो सभी particles के linear momentum का सम, that is P1 vector plus P2 vector plus P3 vector plus so on Pn vector, is p vector, a small p vector, which is the net linear momentum of the system, and it is equal to constant. That is
the law of conservation, which is the law of conservation of linear momentum. Thus, the law of conservation of linear momentum is proved by using Newton's second law of motion. Now we have to discuss examples of the law of conservation of linear momentum. First example is recoil of a gun. Recoil means to move in backward direction. Recoil velocity of a gun can be defined as the velocity with which a gun moves backward after firing a bullet. जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो जिस वेलोसिटी से गन बुलेट को फायर किए जाने के बाद पीछे हटता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जितने वेलोसिटी से गन आफ्टर फायरिंग द बुलेट, उस वेलोसिटी को उस गन का रिक्वायल वेलोसिटी कहा जाता है। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। Gun and bullet both form a system. When the bullet is not fired from the gun, total linear momentum of the system is zero. जब किसी गन से बुलेट को फायर जब तक नहीं किया जाता है तो उस समय बुलेट भी रेस्ट में होता है तथा गन भी रेस्ट में होता है। सो टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मीन्स गन एंड बुलेट इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन then also total momentum of the system, total linear momentum of the system should be equal to zero to obey the law of conservation of linear momentum. जब किसी बंदूक से गोली को फायर किया जाता है तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करता है। ठीक उतना ही मोमेंटम गन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिक्वाइल होकर ऑब्टेन करता है। फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, action and reaction both are equal and opposite. So total linear momentum of the system, that is the bullet and the gun after firing, is also zero. Before firing the total momentum of the system was zero. तो बंदूक से बुलेट को फायर करने के पहले भी गोली, बुलेट तथा गन दोनों रेस्ट में थे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का बुलेट तथा गन का जीरो था, और टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग द बुलेट फ्रॉम द गन यह भी जीरो ही होना चाहिए, तब जाकर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम होल्ड करेगा। क्योंकि अगर बुलेट फायरिंग के पहले टोटल लिनियर मोमेंटम सिस्टम का जीरो है तो टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग भी जीरो ही होना चाहिए। सो राइट डाउन टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मीन्स gun and bullet before
firing equals to 0 since momentum is mass into velocity। तो गन से बुलेट को फायर करने के पहले बुलेट का भी स्पीड 0 है तथा गन का भी स्पीड 0 है, तो दोनों का मोमेंटम 0 होगा, तो 0 + 0 दैट इज 0। एंड टोटल linear momentum of the system, that is system means gun and bullet, linear momentum of the system after firing, यह भी 0 होना चाहिए। और वह कब होगा? जब मोमेंटम गेन बाय द बुलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन will be equal to the momentum gained by the gun in the backward direction. So total momentum of the system after firing is mv, a small m into a small v vector, which is the momentum gained by the bullet in the forward direction, plus capital M into capital V. This is the momentum gained by the gun in the backward direction. जितना वैल्यू एम भी का होगा, स्मॉल एम प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉल एम इंटू अ स्मॉल भी का होगा, दिस इज द मोमेंटम गेन बाय द बुलेट, उतना ही वैल्यू लीनियर मोमेंटम दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द गन एंड कैपिटल वी इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो एम भी का जो कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी का प्रोडक्ट का जितना वैल्यू होगा, उतना ही वैल्यू स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी के प्रोडक्ट का भी होगा। तब जाकर क्योंकि दोनों का जो मोमेंटम है बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि गन का मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी या बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट है ही, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट मीन्स बुलेट एंड गन आफ्टर फायरिंग will also equal to 0. Then the law of conservation of linear momentum holds. So total linear momentum of the system, that is gun and bullet after firing, is equal to a small m into a small v plus capital M into capital V, where a small m is the mass of the bullet, a small v is the forward velocity, matlab that is velocity of the bullet in the forward direction, while capital M is the mass of the gun and capital V is the recoil speed or recoil velocity of the gun in the backward direction. This is equation number 2. And total linear momentum of the system before firing is equal to 0. This is, suppose it is equation number 1. So since no external force is acting on the system, so total linear momentum of the system remains constant before firing and after firing. क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए टोटल लिनियर मोमेंटम सिस्टम का, दैट मीन्स गन एंड बुलेट का, इक्वल होगा टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग टोटल लिनियर मोमेंटम सिस्टम का जितना होगा, उतना ही टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग भी होगा, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग on the system. So using the law of conservation of linear momentum, we have total momentum before firing. So write down using the law of conservation of linear momentum of the system before firing, which was 0, equals to total linear momentum of the system after firing, which is mv a small m into a small v, product of a small m into a small v, plus capital M, product of capital M into capital V. A small m into product of a small m into a small v is the momentum of the bullet, and product of capital M into capital V is the linear momentum of the gun. Therefore we have mv vector capital M into capital V vector is equal to minus a small m into a small v vector. Therefore recoil velocity, that is momentum of the gun
linear momentum of the gun after firing is equal to the linear momentum of the bullet but in opposite direction. So net momentum of the system is 0. So recoil speed velocity of the gun is v vector is equal to minus a small m into a small v upon capital M. This is the formula for recoil velocity of the gun. This is, suppose it is equation number 3. So recoil velocity of the gun is capital V can be obtained from here, that is capital M into capital V equals to minus a small m into a small v from the above equation, that is 0 is equal to a small m into a small v plus capital M into capital V. Therefore capital V equals to minus a small m into a small v upon capital M, and this is the expression for recoil velocity of the gun. गन जितने वेलोसिटी से पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, हटेगा, उसका वेलोसिटी हम ऑब्टेन कर सकते हैं इस फार्मूला से. v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल M. स्मॉल m इंटू स्मॉल v इज द linear momentum of the bullet upon capital M is the mass of the gun. From equation 3, which is the formula for recoil velocity of the gun, it is clear that recoil velocity v vector is inversely proportional to the mass of the gun. कैपिटल M चूँकि डिनोमिनेटर में है इक्वेशन 3 के, जो कि मास ऑफ द गन है, एंड कैपिटल V वेक्टर रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन है. तो रिक्वायल वेलोसिटी कैपिटल V वेक्टर मास ऑफ द गन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए जो लाइट गन होगा वह, जिसका मास कम होगा, वह लार्ज वेलोसिटी से रिक्वायल करेगा, ज़्यादा वेलोसिटी से पीछे मूव करेगा आफ्टर फायरिंग द बुलेट. बंदूक से गोली छोड़े जाने के बाद, फायर किए जाने के बाद जो हल्का गन होगा वह अधिक वेलोसिटी से, लार्ज वेलोसिटी से, मास चूँकि कम है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए वेलोसिटी, रिक्वायल वेलोसिटी ज़्यादा होगा. तो लाइट गन अधिक वेलोसिटी से, लार्ज वेलोसिटी से रिक्वायल करेगा, पीछे हटेगा, जबकि हेवी गन जिसका मास ज़्यादा होगा तो रिक्वायल वेलोसिटी, चूँकि मास डिनोमिनेटर में है तो रिक्वायल वेलोसिटी उसका कम होगा. इसलिए हेवी गन जो होगा वह स्मॉल वेलोसिटी से, रिलेटिवली स्मॉल वेलोसिटी से रिक्वायल करेगा, पीछे हटेगा आफ्टर फायरिंग द गन. और इस फार्मूला पर, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन का फार्मूला पर भी प्रॉब्लम्स, शॉर्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं. NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम 5.19 इस फार्मूला पर बेस्ड है, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन, जिसका सॉल्यूशंस, दैट इज NCERT टेक्स्ट बुक 1 क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 5 का सॉल्यूशंस अलग से किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया गया है, और कुछ प्रॉब्लम्स बाकी हैं, उनका सॉल्यूशंस भी किया जाएगा. तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है. तो इसके अलावा बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में भी इस पर बेस्ड, मतलब रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी सॉल्यूशंस किया जाएगा. Now second example of the law of conservation of linear momentum is explosion of a bomb. Suppose a bomb of mass capital M is initially at rest, that is initial velocity of the bomb u is equal to 0, which is shown in figure 1, that is before explosion the bomb is at rest. Let the bomb explodes into 4 fragments, 4 parts, say M1, M2, M3 and M4, and move with velocities V1, V2, V3 and V4 respectively after explosion. Since before explosion the bomb is at rest, therefore linear momentum of the bomb before explosion is 0.
but after explosion, total linear momentum of the fragments or parts of the bomb will be m1 v1, that is p1, a small p1 vector, that is linear momentum of the first fragment, first part of the bomb, which is given by p1 vector is equal to m1 v1. p2, that is linear momentum of the second fragment of mass m2 moving with velocity v2 is p2 is equal to m2 into v2. Linear momentum of the third fragment or third part of mass m3 moving with velocity v3 is p3 is equal to m3 into v3, and linear momentum of the fourth fragment or fourth part of the bomb of mass m4 and velocity v4 is given by p4 is equal to m4 into v4. These momenta, that is momenta of all four fragments or part of the bomb are represented by four sides of a polygon taken in the same order. So total linear momentum of the bomb, of the fragment, total linear momenta of the fragments of the bomb after explosion will be equal to 0. So using the law of conservation of linear momentum in the explosion of the bomb, because no external force is acting on the system, so the law of conservation of linear momentum can be holds or can be used. So using the law of, write down, using the law of conservation of linear momentum, we have linear momentum, we have total linear momentum after collision equals to linear momentum of the bomb before collision. So, and total linear momentum of all parts or all fragments of the bomb are given by p1 vector plus p2 vector, that is after explosion, plus p3 vector plus p4 vector. बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद चूँकि बम 4 फ्रैगमेंट्स 4 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, सपोज किया गया है इस प्रॉब्लम में, इस केस में, जिसका मासेस m1, m2, m3 एंड m4 है, तथा उन फ्रैगमेंट्स बम के 4 पार्ट्स के और फ्रैगमेंट्स के वेलोसिटीज v1, v2, v3 एंड v4 है, जिसे फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया गया है. तो टोटल लिनियर मोमेंटम और टोटल मोमेंटा, linear momenta of the all fragments, that is the 4 fragments or 4 parts of the bomb is given by p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus p4 vector, and this is the total linear momenta of the fragments, 4 fragments of the bomb after the explosion of the bomb. So p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus p4 vector, and this is the total linear momenta of the system after explosion is equal to linear momentum of the bomb before collision, and linear momentum of the bomb is before collision is 0, because bomb at rest, initially the bomb at rest, that is u is equal to 0. So linear momentum of the bomb before collision is 0, and after collision total linear momentum of the system, that is p1 vector plus p2 vector plus p3 vector plus p4 vector is equal to 0, or we can write in place of p1 vector
m1 into v1 vector. In place of v2 vector, we can write m2 v2 vector. In place of v3, that is linear momentum of the third part or third fragment of the bomb of mass m3 with moving with velocity v3 is m3 v3 plus p4 is the linear momentum of the fourth fragment or part of the bomb of mass m4 moving with velocity v4 is m4 v4 and it is equal to 0, which is the linear momentum of the bomb before the explosion, and thus the law of conservation of linear momentum is applied in case of the explosion of a bomb. Now this video is completed. अब यह वीडियो पूरा होता है जिसमें हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तथा उसके दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया. थैंक यू वेरी मच.